Bonjour, welcome to my channel फिजल फ्रेंच। तो आज मैं आपको इंटेरोगेशन इन फ्रेंच पढ़ाने वाली हूँ। ये होता तो बहुत ही हार्ड टॉपिक है, लेकिन मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाने वाली हूँ। तो इंटेरोगेशन के 3 पार्ट्स होते हैं, अवेक इंटोनेशन, अवेक एस्कर एंड अवेक इन्वर्जन। तो सबसे पहले हम अवेक इंटोनेशन पढ़ेंगे। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। इसके अंदर आपको सिर्फ सेंटेंस के आगे क्वेश्चन मार्क और इसे थोड़ा रेज वॉल्यूम में बोलना होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई टेक वो पोर्ते ला रॉब नुआर मीन्स यू वेयर द ब्लैक फ्रॉक। सो हियर माई क्वेश्चन फॉर्म वुड बी वो पोर्ते ला रॉब नुआर, you wear the black frock. Second is awake esker. So मैं सेम एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग ईजी रहे. So vous portez la robe noire means you wear the black frock. Here I would just put esker in front of the sentence. So my question form would be, est-ce que vous portez la robe noire? Are you wearing a black frock? Now, in case of vowel, if I take an example, elle porte la robe noire means she wear the black frock. So here I will not put eske QUE because L is a vowel here. So I will remove E from the QUE and form the question as est-ce que elle porte la robe noire? Now, this is the last part of the topic, awake inversion. In inversion, we interchange the subject and the verb from the sentence and put a dash between them. So, अगर मैं example ले लूँ कि vous portez la robe noire means you wear the black frock. So, here what would be my subject? Vous means you would be my subject and porter means wear would be my verb. So I will interchange them and form the question, portez-vous la robe noire means do you wear the black frock? Now in vowel, if I take an example, elle porte la robe noire means she wear the black frock. So here L starts from E, which is an vowel. So I will put T between the dash and form the question, porte-elle la robe noire means does she wear the black frock? Now, what are proper pronouns? Proper pronouns is the name of place, animal, thing or any person. So in inversion, if I take an example, Marie porte la robe noire means Marie wear the black frock. So here my subject would be Marie and porte means wear would be my verb. But I will not interchange them because Marie is the proper pronoun. So I will interchange verb and the personal pronoun. So I will keep Marie as it is, and what would be the personal pronoun of Marie? Elle. So I will interchange porte and elle. So it would become Marie porte elle la robe noire. Thank you everybody, and if you like my channel, please subscribe and don't forget to press the bell icon. Merci et bientôt.